आई एम जस्ट स्टार्टिंग देयर। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। ऑल राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग एवरीवन एंड हैप्पी न्यू ईयर। है ना, ये साल आप लोगों के लिए और अच्छा हो। सो मेरी तरफ से आई बिलीव दैट आप सब लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। सो आज का सेशन मैं ज़्यादा लंबा नहीं रखूंगा। आई विल बी कीपिंग शॉर्ट एंड सिंपल। द मेन टॉपिक ऑफ दिस सेशन इज दैट व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज ऑफ 2023। यानी 2023 में अगर हम पूरे 1 ईयर का देखें तो उसमें क्या न्यू इनोवेशन हुआ है और कौन सा न्यू इसमें ब्रेक थ्रू हुए हैं। और आपको पता है कि यू नो दैट यूपीएससी एग्जाम, लाइक दोज ऑफ यू आर गोइंग टू अपियर दिस ईयर एग्जाम 2024 प्रीलिम्स एग्जाम 26 मई, 26 मई को जो पेपर होगा, तो कुछ भी मतलब कहीं अब ये समझो कि कुछ भी ऐसे नए टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट हुए हैं लास्ट 1 ईयर में, यूपीएससी कैन गेट इनटू दैट, कैन आस्क क्वेश्चन देयर। इस कॉन्टेक्स्ट में आई विल जस्ट हाईलाइट दोज टॉपिक्स। और मेरा प्लान क्या है कि today in this session I am highlighting those topics, but I will take each topic and in every new session I'll go in detail। मतलब मेरा कहने का मतलब है आज जो जो टॉपिक्स मैं हाईलाइट करूंगा, मैं आने वाले जितने सेशंस होंगे उन सभी एक एक टॉपिक पे डिटेल्ड डिस्कशन होगा। मैं एक एक करके डिस्कशन मैं करूंगा और टेलीग्राम चैनल में वहां पर सारे जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो मैं अपलोड करता चला जाऊंगा, तो आपको सारी जानकारी मिलता रहेगा। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद दिस। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना स्क्रीन को शेयर करता हूं। मैं यू विल बी एबल टू सी दैट वन। ठीक है, इट इज विजिबल टू एवरीवन। 10 ब्रेक थ्रूज टेक्नोलॉजीज 2023। ठीक है, अब एक एक चीज को मैं डिस्कस करता हूँ क्या क्या चीजें। हर साल कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है, अब इसमें पहला ये क्रिस्पर कैस 9, नोबेल प्राइज भी दिया गया क्रिस्पर कैस 9 टेक्नोलॉजी पे। तो व्हाट इज क्रिस्पर कैस 9 टेक्नोलॉजी, ये मैंने पहले भी सेशंस में बताया है वहां पर। ये एमआईटी टेक्नोलॉजिकल रिव्यू है, वहां से मैं डिस्कस कर रहा हूं मैं। यस अंकित, व्हाट इज क्रिस्पर कैस 9? क्रिस्पर कैस, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी। Sorry, sir, I don't have any idea. अच्छा रितिका, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी। Yes, sir. It's a immune system type. There is an enzyme हाँ CRISPR associated. Uh, Cas9 हाँ, is a enzyme. ओके, लेट मी गो इनटू दिस वन। It's used in modified crops like GM crops, GM organisms, which are produced. Good, you are right there. See here, I'll come to CRISPR Cas9 or CRISPR technology. See, CRISPR technology is a technology is called gene editing tool. Gene editing tool. That means we can edit gene and DNA. We can cut, DNA sequence and join together there. Like for example, I'll just try to make you aware through my written iPad there. You will be able to understand that part. Let me do that one. Sir, should I add this in today's biotechnology notes? Yes. 100%, 100%. And it is very important for the exam. Please add that one. I'm just adding certain point here. CRISPR technology, this one, Cas9. See, when we talk about gene editing, this is basically a gene editing tool. It's a very powerful tool which has been developed to modify any kind of a DNA, right? And as Ritika said, जैसे रितिका ने अभी बताई है
कि it can have wide application, and there's an enzyme which can cut. Like for example, here CRISPR जो है, that is the full form is clustered. Let me give you the full form here. Clustered. R is regular, regularly. I is interspaced, interspaced, SPACED. This I. Then S is short. P is a palindromic. See, full form is not very important, but just I am writing here palindromic P. R is repeat. This is a full form there. It has a palindromic sequence. What is palindromic? Left to right, right to left. It will have same information. जैसे मलयालम, मलयालम को आप लेफ्ट टू राइट पढ़ो या राइट टू लेफ्ट करो, इट विल बी द सेम. ठीक है, तो ऐसा ये जीन है जिसमें यहाँ पर क्या होता है, इसमें दो चीजें हैं. एक क्या है, व्हाट इज वन थिंग, वन इज द काइंड ऑफ आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड, सिंगल गाइडेड बोलते हैं, सिंगल गाइडेड RNA molecule is there. Ribonucleic acid, single strand. You can understand this is a kind of a ribonucleic acid there. And you know RNA is made of a AUCG, adenine, uracil, cytosine, guanine. These are nitrogenous bases, है ना. ये RNA molecule है, single strand. DNA डबल स्ट्रैंड होता है, राइट. और इसके साथ में Cas9 जो है, Cas9 is an enzyme. This Cas9 is like a nuclease enzyme. Nuclease enzyme का मतलब ये होता है that it can cut DNA. So what happens there? Let's say, for example, if this is a DNA, right? Suppose this is DNA molecule, and we want to edit, right? We want to edit this DNA molecule. So what the CRISPR will do? CRISPR will simply go and bind to a complementary basis. It will just go and bind to the complementary base here. Like A will bind with T, U will bind with A, C will bind with G, G will bind with C. तो ये बाइंड कर जाते हैं हम. और ये जो एंजाइम है, दिस एंजाइम, वो एक तरह का मोलिकुलर सीजर का काम करता है, कैंची की तरह. इट विल मेक अ कट, इट विल मेक अ कट इन द DNA. कहने का मतलब है ये कट होके अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा, यानी कि इसको स्प्लाइस कर दिया, कट कर दिया, DNA को कट कर दिया, राइट. तो दिस इज व्हाट फर्स्ट टाइम बीन डिस्कवर्ड इन बैक्टीरियल सेल. ठीक है, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? ये बायोटेक्नोलॉजी मेथड है जहां पर ऐसा RNA होता है जो कि DNA के उसको गाइड कर सकते हैं. We can guide to a particular sequence. So there, this enzyme Cas9 will go and cut, edit. So we can make changes to DNA or gene. Now look at what is the technological breakthrough? What is the technological breakthrough that you will find this one? CRISPR-Cas9. This is what the breakthrough has been there. Is this one? What is mentioned here? So look at here. It is mentioned that, see here very clearly. I'll do one thing here. I will also write something on this. It is easy for everyone. All right. So I'll be able to write something on this one. So here, what you find is that this is editing part. So in terms of cholesterol, you know, cholesterol is a cause of cholesterol. If you look at cholesterol is the cause of fat and cholesterol, cardiac arrest, heart attack. तो उसको वहां कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर ये आता है. So we look at here this one. What is given here? Gene editing tool CRISPR has rapidly evolved from lab to the clinic. Now it has gone to the market. है ना? लैब में डेवलप हुआ, मार्केट भी गया.
एक्सपेरिमेंटल तौर पे इसको स्टार्ट किया गया था। सी फॉर रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर वी कैन यूज द टेक्नोलॉजी फॉर जीन एडिटिंग और एट द सेम टाइम जीन थेरापी ट्रीटमेंट फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जैसे हीमोफिलिया है, you may take any other example there, thalassemia, and has recently expanded to include high cholesterol. क्लिनिकल ट्रायल किया गया हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने में कैसे क्रिस्पर कैस9 कैन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, हाउ क्रिस्पर कैस9 कैन help edit the gene which will be able to control cholesterol, high cholesterol formation in the body from the health point of view, right? This is what the development has been there. So this is again an important topic, it comes there. ठीक है, ये पार्ट को ध्यान में रखना है. Now look at here further. AI, artificial intelligence. You all know that ChatGPT 2023, if you look at ChatGPT, has become very, very important. And ChatGPT has already is revolutionizing the many part of the, like here, artificial intelligence हुआ है. क्या कहा गया? 2023 is the year of the AI artists. Software model developed by Google, OpenAI. ChatGPT is made by OpenAI. That's the name of the company. And now that their few text prompts, and they can give you all description. Right? That has come there. So ChatGPT is another very important innovation of last year, 2023. ठीक है, तो वहां पर ये चीज है. Now third, if you look at here, semiconductor chip. You know that today the entire electronic industry, mobile phone, laptop, computer, all these are based on the chip, semiconductor chip. So what is a chip design that changes everything? A new design has been made. See here, the chip industry is undergoing profound shift. Manufacturers have long licensed chip design. Now a popular open standard called RISC-V is appending those power dynamically. And so new chip design, which will be used in latest advanced technology in future. तो उस पर काम बहुत सारा हुआ है, उसमें बहुत सारे रिसर्च किए गए हैं. ये थर्ड ब्रेक थ्रू है. देन कमिंग टू दिस वन, ड्रोन, मिलिट्री ड्रोन. लास्ट ईयर इज द ईयर ऑफ ड्रोन्स. अगर हम डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात करें तो यू नो दैट फॉर मिलिट्री एप्लीकेशन ड्रोन्स हैव नाउ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. एंड यू नो दैट एडवांस कंट्री लाइक अमेरिका, अब यूएस क्या करे, ड्रोन अटैक भी पहले भी किया अफगानिस्तान में, अभी रिसेंटली फिर अभी ईरान को लेकर है ड्रोन अटैक. इंडिया में भी इस तरह ड्रोन वगैरह हो रहे हैं. अब जैसे ही व्हेन इंडियन प्राइम मिनिस्टर विजिटेड यूएस लास्ट ईयर, तो वी हैड अ डिफेंस डील टू बाय प्रेडेटर ड्रोन जो है ना, विच इज वेरी वेरी पावरफुल ड्रोन, मिलिट्री ड्रोन है. नाउ वी कैन लुक एट हियर, मिलिट्री ड्रोन्स were once out of reach for smaller countries like developing country like India, but now it has gone there. So this is another very important thing is there. अब जैसे इसमें क्या है, now the prices are also falling down of drone there, right? अब सस्ते ड्रोन्स भी आने लगे हैं मार्केट में, और वॉरफेयर में ड्रोन का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, कॉम्बैट ऑपरेशन वगैरह में, गैदरिंग इंफॉर्मेशन, रिकॉनेसेंस. अब यहाँ पे नाम दिया है टर्किश, तुर्की, टर्किश बाई रख्तर, बेरख्तर, सी BAYRAKTTA, टर्किश बेरख्तर TB2. अब ये सब डेवलप किया गया जो कि कम प्राइस में मिलिट्री वॉरफेयर में यूज हो सकता है. तो ये भी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है of 2023. Then you can see here, if you look at here further, another thing here, abortion, telemedicine. What is telemedicine? Where we use satellite technology. ये यूएस में किया गया है. Through that we can have distance way we can give healthcare services. ठीक है, अब जैसे यूएस में then now recently last year abortion जो right होते हैं for women, right? Abortion ceased to be a constitutional right.
in the US in 2022. उस टाइम दिया था. To prevent many people that they're part of this, they have done there. Now another thing here, organs on demand. A बहुत important development हुआ है. A very important development. अब recently lungs को बनाया गया है. I'll give you a very important 3D printer. 3D printing, bioprinting. What is 3D printer? We can print any kind of a design using stem cell. In biotechnology comes stem cell. What is the role of stem cell? Stem cell can divide to produce body cells, different type of cells. So 3D printer can print even the organ using stem cell technology. तो ये जो है, this is the another very important development which has been brought there, right? So we see here another very important development. Bioprinting. Now scientists are able to develop organ in the lab. Bioprinting. तो इसमें दो चीजें हैं, एक है 3D प्रिंटर, और ये 3D प्रिंटर का बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, और दूसरा जो है दैट इज अ स्टेम सेल. व्हाट इज 3D प्रिंटर? इसको बोलते हैं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी कहा जाता है. वी कैन ऐड एंड मैन्युफैक्चर और प्रिंट एनी काइंड ऑफ 3D ऑब्जेक्ट. And what is stem cell can do? It can regenerate cells, kidney cell, lung cell, heart cell. That is part of regenerative medicine. So this technology has been used. और last year lung, human lungs, जो फेफड़ा होता है, उसको 3D प्रिंटर के थ्रू और स्टेम सेल के थ्रू बनाया गया है. ये भी इंपॉर्टेंट इनोवेशन टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू हुआ है. वहां पर अमेरिका में किया गया, यूएस में किया गया, इवन ट्राई किया जा, हार्ट के लिए भी किया जा रहा है, डेवलप दिस काइंड ऑफ बायो प्रिंटिंग जो है ना. तो ये चीज आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है. Every day, and every 16, 17 people US die because of not getting the organ. Organ transplant नहीं होता है. अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है? Scientists have genetically engineered pigs. Pig को किया गया human heart. Right? Scientists ने क्या किया? They have engineered pig whose organs could be transplanted into humans. ये भी न्यू डेवलपमेंट है कि हम पिग को जेनेटिकली इंजीनियर कर दें by using modern biotechnology, recombinant DNA technology, and the pig will carry the human heart. और उसको हम निकाल के सर्जरी के थ्रू मैन में यूज करें. We can transplant to the humans. And again, you see 3D printing lungs using patient's own cell. Cell of the patient has been used to print lungs and then transplanted. That is in medical science and biotechnology is a big breakthrough. Right? Is a big breakthrough. So what is very important here? So when you look at this part here, right? So here, what we have done, genetically engineered pig. So the animal can be there. And this will have this pig will have human organs. Like for example, a very good example, heart. And this can be transplanted in humans. इसको एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड कहा जाता है, जीनो ट्रांसप्लांटेशन. ये वर्ड होता है जीनो ट्रांसप्लांटेशन. यूपीएससी में हर साल कुछ ना कुछ सरप्राइज है. तो ये जीनो ट्रांसप्लांटेशन क्या है? एनिमल टू ह्यूमन काइंड ऑफ थिंग देयर. अगर हम पिक का कर सकते हैं तो अवर नियरेस्ट एंसेस्टर कौन है जेनेटिकली अगर देखा जाए? अवर नियरेस्ट इज चिंपैंजी, राइट? प्राइमेट, वी आर प्राइमेट मंकीज. तो मंकी जो है, तो इन दैट केस मंकी कैन बी genetically engineered. Chimpanzee can be genetically engineered, and we can get the organs. तो एक नया ये डेवलपमेंट 2023 में हुआ है. पिग हार्ट वगैरह जो है, हार्ट फ्रॉम द पिग
उसको यूज किया गया है, right? So now I'm getting back here. If you look at this one, again this part, 3D printed there, right? Now what is given here? Another, if you look at here, the development part of it. So this one, I have covered this one, organs on demand. Now look at this one, electric vehicle, EVs. 2023 has shown the development in the field of electric vehicles, right? Zero carbon emission in terms of electric vehicles there. Then zero carbon, I'm talking in terms of carbon dioxide gas being emitted from vehicle. The electric vehicle works on battery, है ना? बैटरी से काम करता है. अब ये सब जो है slowly market में आ चुका है. Now the market is getting this kind of technology there, electric vehicles, and even the government of India is also promoting electric vehicles. So there is a lot of advancement in बैटरी सिस्टम, स्टोरेज डिवाइस, जैसे लिथियम आयन बैटरी वगैरह है, उसमें कुछ कुछ एडवांसमेंट हुआ है. मोर स्टोरेज चाहिए ना. अब जैसे इफ यू हैव अ बैटरी ड्रिवन कार्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल कार्स, तो वी नीड व्हाट, वी नीड अ काइंड ऑफ अ कंटिन्यूअस, है ना, रनिंग ऑन द रोड. दे शुड हैव दोज बैटरी which can store electric current and can be used for longer distance, 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर्स, 300 किलोमीटर्स, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इफ इट कैन गो फॉर 1000 किलोमीटर्स. तो इमेजिन कि वंस यू चार्ज योर बैटरी एंड यू कैन ड्राइव योर कार thousands of kilometers, it can be really a very good option. Petrol, diesel and CNG, a very good option will be there. अभी आपको पता है कि now electric buses have come, electric bus, है ना, इलेक्ट्रिक बस को अब लाया गया and they're running on the road. So 2023 show that development of electric vehicles. और you know the UPSC मेंस एग्जाम 2023 मेंस एग्जाम में इलेक्ट्रिक व्हीकल पर क्वेश्चन आया हुआ है, AI पे क्वेश्चन आया हुआ है. That's what I'm saying. Any latest technology being developed, UPSC asks question in pre-exam and mains exam. दोनों में क्वेश्चन आता है. ठीक है. Now look at another development. James Webb, JWST. You know about James Webb Space Telescope? NASA's very important telescope. उसको कहाँ प्लेस किया गया? Lagrange point 2, L2, 15 lakh kilometers or 1.5 million kilometers back side of the Earth in the Sun Earth system. वहाँ JWST प्लेस किया गया. Study of universe there. So what was there in the news? Images taken by JWST. जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा जो यूनिवर्स का इमेज फोटोग्राफ किया गया, वो सब न्यूज़पेपर में आया था. See here, breathtaking images of distant cosmos, universe captured by the world's most powerful space telescope, inspired a collective sense of awe and wonder. And analysis for data. Scientists are getting to discover a lot of new things with the help of this telescope. ठीक है, this telescope Lagrange point 2 L2 में रखा गया, right? This is another important thing which come from the space technology, you know, space technology point of view. Now coming to this one, ancient DNA analysis. You know, fossil, genome sequencing. What is genome? Gene plus chromosome, DNA sequencing. तो अभी जो CRISPR का मैंने बात किया, that is gene editing tool. Now another advancement in biotechnology, genome sequencing tools, which has been now been ready to study the old strands of human DNA. You know, anthropology में our ancestors, Neanderthal, Denisovans, उसके जो fossils हैं, उसके जो human DNA को निकाल कर उसका कंपैरिजन मॉडर्न मैन होमो सेपियंस के साथ करने के लिए. एंड यू नो द नोबेल प्राइज इन मेडिसिन गिवन टू द साइंटिस्ट Svante Pabo. He got the Nobel Prize in medicine for this method of extracting DNA from
fossil of human, our ancestors, and comparing with all such species of humans and also with modern man and find out lineage. That is from the part of the anthropological study, physical anthropology. You know, the idea of studying traces from humans who lived long ago, thousands of years back, reveal much about who we are and why the modern man, modern world looks the way it does. Ultimately, these genes have come from ancient humans, जो human पहले थे, उन्हीं से हम लोग को आया हुआ है. So that understanding has been developed. So scientists can understand the lives of regular people living back, कि पहले कैसे लोग रहते थे, how humans used to live at that time, है ना? So that is where the ancient DNA analysis, and again the Nobel Prize has been awarded. See, Nobel Prize is very, very important. Whatever field of science and technology, physics, chemistry, medicine, physiology, whenever it comes, that always becomes important. ठीक है, तो ये इसको ध्यान में रखना है. फिर then I'm coming to another one, the last one, 10th one here, battery recycling of battery, circular economy, electronic waste, e-waste, right? And today recycling is very, very important, because otherwise what will happen, the landfill site, solid garbage and dump yard, कूड़े का पहाड़ जो होता है, that's getting bigger and bigger. So we require the recycling. And now what government want to promote? Electric vehicles, e-vehicles, EVs, and which run on battery. So one big challenge in future will be those batteries which are used in car, buses, that need to be recycled. So there again, companies are building facilities that will reclaim lithium. Rechargeable batteries made of lithium. अभी इंडिया में भी lithium deposit पाया गया है. And now we are thinking of trying for mining of lithium, and then again using such kind of batteries. So reclaim lithium, nickel, cobalt, and again use these metals again back to form or manufacture lithium ion battery. यानी लिथियम ऐसे बैटरी, ईवी की बैटरी से, लिथियम बैटरी से लिथियम, कोबाल्ट, निकल को एक्सट्रैक्ट करना और फिर उसको रिसाइकल करके न्यू बैटरी को बनाना, मेकिंग न्यू बैटरी देयर, and that will reduce the cost of manufacturing, enhance the scope in the future, है ना? तो ये 10th ये चीज है, ब्रेक थ्रू, राइट? तो ये सारी चीजें जो है, जो भी ऐसे ब्रेक थ्रूज हुए हैं, है ना, वट एवर ब्रेक थ्रू, यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट. नाउ विल लुक एट हियर दिस वन, another page. I mentioned AI, artificial intelligence, chat GPT. बहुत सारे वेबसाइट में ये सारी चीजें आया हुआ है. एंड देन यू कैन सी हियर दिस वन, क्वांटम कंप्यूटिंग, अनदर वन, क्वांटम कंप्यूटर, गूगल, IBM, क्वांटम चिप. IBM ने एक नया चिप बनाया है, यू कैन सी दैट. व्हाट यू सी द इज अ क्वांटम चिप. इससे पहले गूगल ने बनाया था. IBM से न्यू हेरन, CHERON, हेरन चिप. And the quantum computation. What is quantum computation? Where it will not be normal bits and bytes, rather it will be from qubit, quantum bits of information. So scientists are going to use the future quantum computer or quantum machine, which will be very, 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 very fast than our present day supercomputers. Not only scientific research, right? Even we can use for data encryption, encoding of data, right? Lot of applications will come from quantum computers और future में quantum communication. Today we use radio waves, mobile phone and all this one. Future will be through quantum communication. ये सब बहुत तेजी से हो रहा है. Next 10 years, they will all be coming the part of our human life. Industry, agriculture, space, defense, right? Our day-to-day life will be now be revolutionized by quantum. Another breakthrough is there. और ये सब अभी यूपीएससी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना? I have already a video. Just go to my list of videos
you will find new technology. I have discussed quantum computers. आप मेरे वो YouTube channel में, just in the my YouTube channel, go to the video section, and in the video section you'll find I have already covered with a panel digital board on quantum computer. Just go through that. And even UPSC has asked one question. Only one question has been asked. Qubits are used in where? A, B, C, D. Simple question. Qubit, quantum bits. Simple question was asked. Right? Again, UPSC can ask the question. And one more thing, Nobel Prize. Quantum dots. Last year, Nobel Prize has been given for quantum dots. What are quantum dots? Semiconducting atoms, which can produce light of pure color, red, green, all the pure colors are there. And quantum dots can be used in electronic industry, display panel, right? Computation. The quantum dots technology has already come to the market. QLED, quantum LED, TV panel, now being sold in the market. So last year, Nobel Prize is given for this particular research to the scientists. Google has done quantum computing. Now IBM, what is the name of the chip? Quantum chip? Heron, Heron. That was in the news. And definitely UPSC prelims exam question can be asked on this topic. है ना? इस पे क्वेश्चन आ सकता है. तो मैंने कुछ एरियाज को मैंने हाईलाइट किया है और कुछ और एरियाज है. लेट मी जस्ट गिव यू मोर एरियाज. लेटर ऑन वी विल कम टू दैट. टॉप 15 न्यू टेक्नोलॉजी ट्रेंड. अब इसमें जो है, लेट मी जस्ट हाईलाइट दैट. बाद के सेशन में, नेक्स्ट सेशन में मैं जब मैं आऊंगा तो आई विल डिस्कस दैट. अब जैसे एआई है, एआई एंड ऑटोमेशन लाइक रोबोटिक्स, automation where we automate. The machine will do the task, software will do the task, human interference will not be required, right? Then you can see here augmented reality, virtual reality. UPSC में क्वेश्चन आ चुका है, AR and VR. AR is the where we through AR we can superimpose image, videos, any kind of thing. VR is the virtual reality, immersive. You use the headset and you are into that world, like metaverse. Internet of Things, where devices with sensors can communicate with each other. IoT. Then blockchain technology, encoding of data in terms of blocks. And cryptocurrency use blockchain technology, but blockchain technology can be used for variety of applications where we want to secure data through a series of blocks. Blockchain technology. UPSC question आ चुका है. 5G technology, wireless communication we are using, cloud computing. Today we are using cloud computing. All the backup, even streaming, computation from cloud. Cyber security, quantum computing, now zero trust security. There's a software, zero trust security, JTS is a software which will secure the data completely. Nobody can hack. Biometric identification of person based on the biological aspect. Biometric, today we use for biometric attendance, Aadhaar card. Robotics, Sophia, humanoid robots. Space technology, rover. Now India carried out Chandrayaan 3 Pragyan rover there, Vikram lander Pragya rover. Now we are going to insert Aditya L1, Aditya into L1 into hello orbit around Lagrange point 1. We are lined up January 1st. PSLV has successfully launched XPOSat, X-ray polarimeter satellite, our astronomical satellite to study black hole, neutron stars. Edge computing. What is edge computing? Cloud computing, where the cloud. See, cloud is far away from the place. We are using laptop, computer, mobile phone. But where is the cloud? Cloud is a server, virtual server. Not here, somewhere else. It may be within the country or maybe in some other country. But what is edge computing? Edge computing is that where the devices can store data, back up the data, process the data, do the computation into edge device. There will be device
called edge device, just like a mini server, mini server, which will be very near to our office, our workplace, our home, and we will back up the data in a edge device, and that device will be connected to cloud computing. That means all the data will go to edge, from edge it will go to cloud. The cloud will not have all the data, it will filter through edge. तो कई बार कोई भी सेंसर है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, कहीं कुछ खराब हो गया, कुछ भी है, तो एज कैन डिटेक्ट वेरी फास्ट, राइट? तो वो लोकल एप्लीकेशन देगा वो। मैं इस पर डिस्कस करूंगा, आई विल डिस्कसिंग इन द फ्यूचर। डिजिटल ट्विन, व्हाट इज डिजिटल ट्विन? डिजिटल ट्विन इज ऑल फिजिकल एसेट कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्म। अवतार, अवतार, आप अपना अवतार क्रिएट कर सकते हो। यू कैन क्रिएट योर अवतार ऑनलाइन, डिजिटल फॉर्म। You can create avatar for this pen. It's a physical asset. This the pen is a physical object. Same physical object will be digital object in the virtual world. This is called digital twin. One is physical, second is virtual twins. Exact thing. Exact this will be digital form in the computer world, virtual world, digital twin. Natural language processing, NLP, where AI, artificial intelligence, can learn from data, learn the languages, process the data. That is going to be advanced application of AI system, NLP, natural language processing. Just a human brain process the language, machine will do that, right? So all these things will be covering in future classes. I will be doing that one. ठीक है? तो ये दिस सेशन का यही मतलब था कि एटलीस्ट न्यू ईयर ये नया साल है कि एटलीस्ट आई कैन कम ऑनलाइन एंड have something to discuss there. Plus, this is just a way in future sessions we'll go in more detailed part of it. ठीक है? I hope you are able to understand. है ना? आज तो थोड़ा लेट सेशन हुआ है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हो। Yes, Right? sir. Okay. First of all, those who are the online, so very good evening to all of you, and at the same time, happy new year to everyone. So Avnish is there, right? इनवर्ट की क्लास की है आपकी? अभी तो नहीं है, ठीक है? और यूज हिंदी, हाँ मैं वही बाइलिंगुअल यूज में कर रहा हूँ, जो भी यूज कर रहा हूँ बाइलिंगुअल यूज कर रहा हूँ। फिर हियर दिस वन मोनू कुमार है। सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग और हैप्पी न्यू ईयर, राइट? एंड मोनाली पांडा इज देयर, हैप्पी न्यू ईयर मोनाली, हैप्पी न्यू ईयर अंकित, देन वंश, राइट? सो ऑल ऑफ यू हैव जॉइंड राइट नाउ, दैट आई एम वेरी वेरी ग्लैड टू सी यू ऑल। सबको देख के मुझे खुशी हो रही है और हम लोग भी और इंटरेक्ट करेंगे। तो थोड़ा बहुत इधर उधर मुझे भागदौड़ करना पड़ रहा है, बट विल बी हैविंग दैट, राइट? एनीथिंग टू आस्क जो लोग जूम में है? यस, नो? Sir, what is the difference between S400 and PAD? S-400 is basically missile system, anti-missile system of Russia. Yes, sir. It's very powerful system. It can intercept incoming missile and destroy in the air, Yes, right? sir. And which is another one you have asked? PAD, Prithvi Air Defense. Prithvi Air Defense is our India's part of it, which can, again, PAD is also same as anti-missile system, but is of India. DRDO has developed. Like the work is same, is like Work is same. defense against incoming air missiles. Correct. Work is same. Okay, The sir. work is in there, but Russia has more advanced system. That part is there. Yes, sir. Yes, sir, understood. All right. So glad to see you all. विनय को, रितिका को, सबको, है ना? तो अभी मैं किसी तरह से इस टाइम पे कर रहा हूँ, और वन इज गोपाल ऑल्सो देयर,
So what we'll do, we'll stop the session here. ठीक है? Already 11 o'clock is there. And those who have written the assignment, so please, submit the assignment in the Telegram group. मैंने क्वेश्चन दे रखा था, तो उसको आप सबमिट कीजिए आप. Now इस सेशन का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है. ये is all from the website. I've used one is the MIT journal, second is Science Wire, and third I've taken from Viz Labs. So there's nothing like a document here. It was just a brief session to just highlight important technologies. कि जो जो ऐसे important technologies 2023 का है, जहाँ यूपीएससी में क्वेश्चन आ सकता है, स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन आ सकता है, बाकी एग्जाम में आ सकता है, उसको हाईलाइट मैंने किया. ठीक है? जब भी कोई डॉक्यूमेंट होगा तो मैं टेलीग्राम में डाल दिया करूँ. ठीक है? तो जो लोग नए हैं यूट्यूब चैनल में और जूम, तो यू कैन गो टू दैट टेलीग्राम चैनल एंड सी द थिंग्स देयर. ठीक है? So one more question. So in bioprinting, that heart is grown inside the pig or like it is printed? No. In bioprinting, it is printed outside in the lab. लैब में इसको प्रिंट करते हैं यूजिंग स्टेम सेल. बट व्हेन यू टॉक अबाउट पिग हार्ट, तो वो दैट इज इनसाइड द पिग. So दैट इज like I didn't understand the relation between like a pig and that bioprinting part. नो, बायोप्रिंटिंग इज डिफरेंट टेक्नोलॉजी. दैट डिफरेंट. Yes, sir. Bioprinting is different. Bioprinting is very completely different one, where we use 3D printer and print that organ using stem cell, right? Okay, sir. Whereas there's another way where we take the pig, we engineer the pig, we genetically engineer the pig so that pig has got a human heart. Oh, okay, sir. The two different things. Okay, sir. Thank you, sir. थैंक यू, थैंक यू. हाँ, मोनू, मोनू, हरियाणा आऊंगा मैं. हरियाणा पे मैं प्लान कर रहा हूँ. आई विल कम टू हरियाणा. बिल्कुल, मैं जब भी मुझे टाइम मिलेगा और मौका मिलेगा, मैं जरूर हरियाणा आऊंगा मैं. है ना? सोनीपत में जाता था, जिंदल में, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी है, जो कि आपको पता है सोनीपत में. तो 2 साल पहले कई बार जाना होता था वहां पर. तो अभी पेंडेमिक के बाद नहीं जाना हो रहा है, बट बिल्कुल मैं जाऊंगा. हाँ, ईएसए का, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का हेरा मिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यस्टरडे, कल वो न्यूज में आया हुआ है द हिंदू पेपर में. दैट इज अबाउट एस्ट्रॉइड. 2 एस्ट्रॉइड है. डिडाइमोस. डिडाइमोस नाम का एस्ट्रॉइड है, नियर अर्थ एस्ट्रॉइड है. उसको वहां पर ईएसए के द्वारा जाके उस सैंपल को स्टडी करने के लिए भेजा जाएगा. इससे पहले नासा ने DART डार्ट एक्सपेरिमेंट किया, जहां पर डबल इम्पैक्ट एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट, जहां पर वो इम्पैक्टर का यूज किया गया. राइट? डार्ट में क्या है कि दे यूज द इम्पैक्टर, हाई स्पीड इम्पैक्ट. मतलब जैसे होता है ना, यू हैव टू टू एस्ट्रॉइड्स, है ना? उसमें उन्होंने क्या किया, सैटेलाइट को एक इम्पैक्टर की तरह यूज किया एंड हिट द एस्ट्रॉइड so that the asteroid can change the path. That is NASA's DART mission, double asteroid redirection test. बल्कि जो हेरा मिशन जो है, हेरा मिशन ऑफ दिस व्हाट इज कॉल्ड हियर ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी. तो हेरा मिशन इज अ डिफरेंट वन. What is Hera mission? Hera mission, that is mostly from the point of view of sending a spacecraft to this asteroids, right? Sending the spacecraft to the same asteroids, and then from there study the sample, है ना? उसका sample को study करने की बात है. That is what comes here. जहाँ पे यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है, डिडाइमोस और डाइमोर्फोस, ये 2 डबल एस्ट्रॉइड जो है, तो वहां पर किया जाएगा. उसमें वहां पर डार्ट जो हिट किया था डाइमोर्फोस को, है ना, जो उसको चेंज द पाथ, यहाँ पर सैंपल का स्टडी किया जाएगा. काइनेटिक इम्पैक्ट था वहां पर. हेरा मिशन जो है ना, तो वो जाके मतलब रिटर्न टू द सेम एस्ट्रॉइड्स, राइट, सिस्टम दैट नासा डार्ट मिशन इज देयर. और वो जैसा मैंने बताया कि डिफेंस टेक्नोलॉजी लाइक इम्पैक्टर, जस्ट लाइक मिसाइल, उसका यूज किया गया था.
डार्ट में जो था डाइमॉर्फोस को हिट किया गया था विद हाई फोर्स, जैसे उसका डायरेक्शन चेंज किया गया था। काइनेटिक इम्पैक्ट टेक्निक या काइनेटिक काइनेटिक इम्पैक्टर बोलते हैं उसको, है ना, वो चीज वहां पे किया गया था। तो हेरा मिशन को आप कर सकते हो आप, है ना। वेल, हेरा मिशन क्या है? स्टडी द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एस्ट्रॉइड, सैंपल का स्टडी करेगा। ईएसए का जो हेरा मिशन है, सैंपल स्टडी किया जाएगा एस्ट्रॉइड का, सेम एस्ट्रॉइड बट देयर स्टडी सैंपल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ द एस्ट्रॉइड, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस्ट्रॉइड, वो स्टडी किया जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। सर ये जो स्टेम सेल आपने बताया ना, तो वो स्टेम सेल तो आप बोन मैरो, इन्फेंट का बोन मैरो से लिया जाता है, तो उसके बाद वो प्रोसेस्ड होता है, राइट? वो राइट राइट, प्रोसेस्ड होके मतलब वो 3D प्रिंटर के जरिए वैसा हार्ट, वैसा किडनी, वैसा शेप में आता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो जब ट्रांसप्लांट होता है किसी ह्यूमन के बॉडी के अंदर, तो उसमें कुछ टेस्ट वगैरह नहीं होता है कि क्या मतलब इनके बॉडी में ये फिट होगा कि नहीं होगा? ऐसा नहीं ट्रांसप्लांट होने के पहले टेस्ट वगैरह किया जाता है? नहीं, ट्रांसप्लांट के पहले उसका पूरा स्टडी किया जाता है, पर्टिकुलरली द इम्यून रिएक्शन, क्योंकि इम्यून सिस्टम को भी एक्सेप्ट होना चाहिए। तो दे डू द टेस्ट, मतलब ऐसा नहीं है, लैब में बनाया जाता है उसको डेवलप करके वहां पे, लेकिन बट उसकी टेस्टिंग वगैरह भी की जाती है, दैट इज डन देयर। क्योंकि ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली भी मेक इट एंड टेक इनसाइड द बॉडी विल एक्सेप्ट, ऐसा नहीं होता है। तो वो चेंजेस किया जाता है, उसको टेस्ट किया जाता है, देखा जाता है कि एक्सेप्टेबिलिटी क्या है। कई बार हमें वो भी देखना होता है इसके साइड इफेक्ट क्या है, तो वो सब स्टडी करते हैं, है ना। अच्छा, मोनू का एक और क्वेश्चन है कि नासा आर्टेमिस 2 डिफरेंस फ्रॉम प्रीवियस 1970s। कोई डिफरेंस नहीं है इन आर्टेमिस मिशन, मैन विल लैंड ऑन द मून, राइट। ये भी कल के पेपर में साइंस में दिया हुआ था कि दैट इन आर्टेमिस सेकंड मिशन, जस्ट लाइक इन 1972, टिल 1972, राइट, टिल 1972 नासा has done manned mission. First mission, Apollo 11 mission. That was 1969. Now Artemis 2 mission will again put man on the moon. लैंड कराएगा वो, सिमिलर मिशन है। बस हाँ, एक अंतर यही है कि आर्टेमिस 2 मिशन में और भी स्टडी होंगे, वाटर फाउंड ऑन द मून, सैंपल ऑफ द मून, न्यू डिस्कवरी विल बी मेड, न्यू स्टडी विल बी कैरिड आउट, ठीक है। दैट आर्टिकल ऑफ हिंदू पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट, कल जो न्यूज में आया हुआ है साइंस में जो है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ये ट्रांसप्लांट वाला जो बताया आपने, तो उसमें तो ह्यूमन बॉडी में सारा कुछ टेस्ट वगैरह होता है कि ये ट्रांसप्लांट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। लेकिन वो जब मतलब बना के स्टोर करके रखते हैं लैब में, तो हम्म। मतलब वो रखने के बाद जो आता है, तो उसका मतलब जो ऑर्गन आता है, उसका क्या कुछ नहीं होता है? मतलब उसका करते हैं ना, वो भी है। एक्चुअली क्या है कि जो स्टोरेज हम करते हैं, तो जो लैब में भी होता है, जो हम स्टोर भी करते हैं, जब जैसा हमें कोई नीड होता है, व्हेन जब सर्जिकल सर्जरी के नीड होता है, तो वी यूज दैट वन। कई बार ऐसा भी होता है कि हम, मान ली कोई ह्यूमन को नहीं वहां पर करना है, तो हम रिसर्च के लिए भी यूज करते हैं समटाइम देयर। बट नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी ऑर्गन है, लेट्स से फॉरगेट अबाउट स्टेम सेल एंड 3D प्रिंटिंग, 3D प्रिंटिंग और इसकी बात हमारा भी है, नॉर्मल केस में भी जो ऑर्गन्स होते हैं, जो ऑर्गन बैंक होता है इन हॉस्पिटल्स, ऑर्गन बैंक होते हैं, तो वहाँ ट्राई किया जाता है कि उसके, है ना, प्रॉपर मिल जाए जहाँ उनको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी क्या होता है, पहले टेस्टिंग की जाती है कि वेदर जिसको हम देने जा रहे हैं, चाहे वो आई हो या किडनी हो, कोई भी ऑर्गन है, कि वेदर वो एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, इम्यून इम्यून एक्सेप्टेंस। अब बाकी सारी चीजों की पहले इन्वेस्टिगेशन करना होता है, देन द सर्जरी के थ्रू ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, ये पार्ट है। ओके अब सर, थैंक यू। कई बार रिसर्च के लिए भी होता है। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। सो गाइस, आज मैंने थोड़ा ओवरव्यू दिया है, I've given you overview regarding what were the important technologies which were in headlines last year, ठीक है, but those technologies are again continuing in 2024 also,
and they will continue for next number of years. So we'll go into detail part one by one. That is, ठीक है? तो आई थिंक सबसे पहले तो सभी को थैंक यू मैं बोल देता हूँ कि यू आर अवेक दिस टाइम अटेंडिंग दिस सेशन ठीक है और एंड आई बिलीव कि पढ़ाई लिखाई चल रही हो है ना यू ऑल आर स्टडिंग वेरी वेल राइट तो तो आई विल डू वन थिंग आई विल स्टॉप द सेशन राइट नाउ कमिंग सेशन विल हैव अ मोर डिटेल्ड डिस्कशन ठीक है एंड प्लीज बी इन टच मतलब टेलीग्राम चैनल में टच में रहना है आई विल बी कीप ऑन सेंडिंग नंबर ऑफ लिंक्स एंड डॉक्यूमेंट्स विच यू हैव टू फॉलो दैट तो वो उससे फॉलो करते जाना है ठीक है राइट Sir, year-end review for departments. हाँ वो भी मैं कवर करूंगा मैं आई कवर दैट Yes, sir. मोनू इज सर वो आस्किंग ट्रेल स्पीसीज ब्लेजर वाला पीडीएफ आपने अभी तक नहीं भेजे। अच्छा कल मैं पक्का मैं करता हूँ मैं मैम को मैं दे दूंगा मैं आज मैंने मैम से मांगा भी था टुडे आई जस्ट साइंतनी मैम से मैंने पूछा भी था कि मैम फिर से मुझे वो स्पीसीज आप भेज दीजिए सो दैट आई कैन कंपाइल एंड गिव इट देयर तो कल मतलब हर बार मैं प्रॉमिस करता हूँ नहीं दे पर बट टुमारो आई विल डू दैट वन अच्छा मोनू इज आस्किंग लूनर ट्रेल ब्लेजर दैट इज मिशन अगेन टू स्टडी मून वाटर ठीक है ऑर्बिटर मिशन जैसे चंद्रयान का ऑर्बिटर मिशन है तो लूनर ट्रेल ब्लेजर इज आल्सो ऑर्बिटर मिशन विच विल डू द मैपिंग ऑफ मून सरफेस साउथ पोल टू फाइंड आउट वाटर है ना पानी को खोजने के लिए कहाँ पर मून में जैसे हमने चंद्रयान में किया है तो पूरा मैपिंग वगैरह किया जाएगा वो लूनर ट्रेल ब्लेजर वो मिशन है वहां पर ठीक है सो एनीवे प्रमोद हैज ज्वाइंट नाउ तो हेलो प्रमोद हैप्पी न्यू ईयर राइट सो गुड टू सी यू ऑल दिस टाइम श्रेया हैप्पी न्यू ईयर Yes, sir. Happy New Year to you too and your family also. थैंक यू तो पढ़ाई चल रही है ठीक से अच्छे से Yes, sir. सर वो एनवायरमेंट में रूल्स गाइडलाइंस जैसे हाँ वो कोस्टल आपने के लिए बताया है ना वेटलैंड के लिए हाँ ये वेटलैंड्स के सर रूल लिखिए टेलीग्राम पे काफी सारी चीजें उसको लिए मैं करूंगा उसमें मतलब आई इसे विल नोट्स डू दे दीजिए। नोट्स भी मैं दे दूंगा आई ये सर कवर थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम ठीक है गाइस जितने लोग हैं जूम में और जितने लोग यूट्यूब चैनल में हैं तो मैं आज्ञा लूंगा आप लोगों से ठीक है एंड विल मीट सून और टेलीग्राम में कांटेक्ट में रहना है बहुत सारे जो भी चीजें हैं एंड प्लीज जो चैट है उसमें आप लिख दिया करो आई विल बी लुकिंग टू दैट वन ठीक है और नया साल एक नई शुरुआत नए उमंग के साथ होना चाहिए और एकदम अच्छे से तैयारी करना है ठीक है दिस ईयर शुड बी योर सक्सेसफुल ईयर राइट यू शुड क्रैक द एग्जाम आपको निकालना है इस एग्जाम ठीक है राइट Okay, sir. Thank you, sir. Good night. तो अभी इसलिए क्योंकि 1 आवर का मैंने सेशन रखा है नेक्स्ट टाइम विल बी द लॉन्गर वन और कुछ लोगों का मुझे आंसर मिल चुका है असाइनमेंट क्वेश्चन दोज हु हैव स्टिल ट्राइड टू राइट एंड सबमिट प्लीज सबमिट योर आंसर्स इन द टेलीग्राम चैट ग्रुप आई विल गो थ्रू दैट ठीक है तो वो आप लिख सकते हो कुछ लोगों का मुझे मिला है ज्यादा लोगों को नहीं मिला है बट स्टिल दोज हु वांट टू राइट तो नेक्स्ट सेशन आई विल डिस्कस द फीडबैक आल्सो देयर राइट ठीक है So Monali, yes, it's very late now. So I will be stopping the session, but we'll meet soon again. जल्दी हम लोग मिलेंगे ठीक है मोनू इज आस्किंग एससीएस के लिए यस हरियाणा सिविल सर्विस के लिए भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट हर एग्जाम के लिए कॉमन ही होता है अब जो भी एग्जाम अब दो आप चाहे हरियाणा यूपी और एमपी राजस्थान बिहार झारखंड जितने भी एग्जाम्स हैं तो साइंस जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी का एरियाज ऑलमोस्ट कॉमन ही रहता है थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो वो सारी चीजें मैं कवर कर रहा हूँ मैं आप मेरे वीडियोस को जाकर देखिए मैंने पहले भी बहुत सारे किए हैं एंड आई विल डू मोर इनटू दैट और भी मैं करूंगा मैं ठीक है कल का सेशन नहीं हो पाएगा मैं ट्राई करूंगा मंडे को जो है ना कल का टुमारो बिकॉज संडे आई एम फ्लाइंग टू भुवनेश्वर संडे मेरी फ्लाइट है भुवनेश्वर का तो मैं अभी कोलकाता में हूँ आई एम राइट नाउ कोलकाता फ्रॉम कोलकाता आई विल बी गोइंग टू भुवनेश्वर
फॉर एप्टी प्लस क्लास। तो वहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मेरी क्लास है भुवनेश्वर में। सो इसलिए मैं वीकेंड में नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि मेरा सैटरडे संडे वीकेंड बैच आर गोइंग ऑन, है ना। एप्टी प्लस में वीकेंड बैचेस हैं, वो मॉर्निंग टू इवनिंग होता है, और फिर ट्रैफिक भी होता है टू कम बैक टू दी गेस्ट हाउस। तो वीकेंड में नहीं रख रहा हूँ, तो आई विल मीटिंग ऑन मंडे देयर, राइट। सो एनीवे, गुड नाइट एवरीवन, वी विल मीट सून देयर, राइट। सो जूम पीपल, shall we end the session? Thank you, sir. Thank you, Thank sir. you. Thank you, everyone. Let's meet again. So we will get back there. We'll meet regularly there. ठीक है? Take care. Bye. Good night. Good Bye, night. sir. Good night, sir.